So today's topic is medical termination of pregnancy. ठीक है, यानी there is a viable pregnancy going on and we are deliberately terminating that pregnancy. In the previous class we studied about the abortions. Abortions were which happened spontaneously, right? वो हमने पढ़ा था ना कि threatened हो सकते हैं, incomplete हो सकते हैं, missed हो सकते हैं. Now medical termination is everything is going fine, but we do not want or the patient doesn't want to continue the pregnancy. So it is the deliberate termination of pregnancy before the period of viability of fetus. ठीक है, अगर आप किसी प्रेगनेंसी को 38 वीक्स पे जेल डाल के या ऑक्सीटोसिन डाल के डिलीवर कराते हो तो दैट इज डिलीवरी, बट बिफोर 24 वीक्स अगर आप उसको बेबी को एक्सपेल आउट कराते हो फीटस को, दैट इज अबॉर्शन, राइट? सो एनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, दैट इज बिफोर 24 वीक्स, कम्स अंडर द अबॉर्शंस. अब क्या, अगर अबॉर्शंस को लीगलाइज करेंगे तो हर कोई करने लग जाएगा, हर कहीं होने लग जाएंगे. ठीक है, देयर आर सेप्टिक अबॉर्शन जिसमें हमें पता है दाइयां कर देती हैं, स्टिक्स डाल देते हैं, कुछ देसी दवाइयां दे देते हैं, बट दोज आर नॉट लीगल अबॉर्शंस, दे आर सेप्टिक अबॉर्शंस. So there has been an act which was formed by the government in 1971. Okay, that is the MTP Act. Now recently it has been amended in 2021. तो कुछ changes हुए हैं उस act के अंदर, but the basic concept remains the same. When can we terminate the pregnancy? When the continuation of pregnancy involves serious life or grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman. अब रिस्क टू हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन कैसे होगी? जैसे मान लो उसको कैंसर है, उसको ऑपरेट कराना है या कीमोथेरेपी करानी है, तो अगर 9 महीने रुकेंगे तो द पेशेंट माइट ऑल्सो डाई. या सिवियर हार्ट डिजीज है, शी कैन गो इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इफ द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस. या शी इज हैविंग रीनल फेलियर and she requires an urgent renal transplant, so we will have to terminate that pregnancy. So when there is a serious risk to the health of the mother, that if she waits for 9 months for the delivery, then it can hamper her own health, then termination is justified. Second reason can be substantial risk of the child being born with serious physical and mental abnormalities. So as you all know that in the first trimester nowadays we can do double marker test, NT-NB sonography, level 2 ultrasound, something substantial risk to the child being born with severe physical and mental disability. So if we do a level 2 scan and we see that there is anencephaly, there is omphalocele, there is spina bifida or there is meningomyelocele, so there is a chance that this child will be born with physical disability. Or mental disability, suppose we are doing the quadruple test or the double marker test and we found out that there is going to be Down syndrome in this child, trisomy 21. So if we find out in time, then we can terminate this type of pregnancy. Third is when the pregnancy is caused by rape, then also this pregnancy can be terminated, or it is caused by a failure of contraception. ठीक है, अब ये जो इसमें failure of contraception का गवर्नमेंट ने दिया है, this has made the termination of pregnancy quite easy. Okay, because everybody can claim that my contraception failed, so I got pregnant. So these pregnancies also can be terminated under the MTP Act. So to save the life of the mother, for social indications and for eugenic or abnormality in the fetus, we can terminate an ongoing viable pregnancy. So now who can terminate the pregnancy? ये तो हो गया कि कौन सी कर सकते हैं. माँ को कोई दिक्कत होने वाली है, बच्चा खराब है, रेप की वजह से हुई है, ये तो किसकी करनी है और कौन कर सकता है? Who can do this termination and where? So only person who has assisted in 25 MTPs in a government center and has a certificate for it can terminate the pregnancy. Somebody who has done 6 months of rotational training, that is JR-ship करते हैं ना, in gynecology and obstetrics, they can terminate pregnancy. Or anybody who is a master or a diploma in gynae and obstetrics can terminate the pregnancy. ऐसा नहीं कि आप MBBS करके निकले और आपने MT pills देनी शुरू कर दी. So this is the criteria for the person who can terminate. Now where can this be performed? अब हमारे क्या होता है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करके बॉडी होती है. दे डू द इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स एंड दे सी कि आपका डॉक्टर क्वालिफाइड है, आपकी जो जगह है वहां पे ऑटोक्लेव की, OT की सारी सुविधाएं हैं. देन दे विल अप्रूव योर हॉस्पिटल फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड ओनली सच अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स बाय द गवर्नमेंट कैन कैरी आउट मेडिकल टर्मिनेशन.
अब जो पर्सन है और जो प्लेस है वो तो डिसाइड हो गई, हमें करना क्या है? फर्स्ट वी हैव टू राइट एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट. पेशेंट से हमें कंसेंट लेनी है कि वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एंड शी हैज टू साइन दैट शी वांट्स द प्रेगनेंसी terminated, and this written consent is to be given to the Director General of Health Services in a sealed envelope. Okay, and if the person is a minor girl or a lunatic, then the parents will have to sign the written consent. So now what was there in the amendment in 2021? जब 1971 में लॉ बना था तो उन्होंने कहा था कि सिंगल qualified doctor can terminate pregnancy up to 12 weeks, and by the signature of 2 doctors who say that this termination is essential, you can terminate up to 20 weeks. But now this has been amended and pregnancies can be terminated up to 24 weeks by the signature of 2 medical practitioners and up to 20 weeks by the single medical practitioner. So this is the change in the 2021 Amendment Act. ठीक है, अब ये चेंज हो गया. अगर बुक्स में चेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना दिस इज द न्यू गाइडलाइन. नाउ मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन. अब आपको ये भी पता है कि इसकी कर सकते हैं, पेशेंट विलिंग है, उसने साइन भी कर दिया, आप भी क्वालिफाइड हो. अब करना कैसे है? ठीक है, सो अप टू 24 वीक्स वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन. अब दोनों में अलग अलग तरह के मेथड्स क्यों यूज होते हैं? बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, सॉफ्ट टिश्यू है, छोटा सा प्लेसेंटा है, तो वो मेथड्स अलग होंगे. आफ्टर 12-13 वीक्स क्या हो जाता है, स्केलेटल टिश्यू बनने लग जाता है, बोन्स बन जाएगा, हेड स्कल बन जाएगा. So there are different methods of termination. So in the first trimester there is menstrual regulation, first method we'll discuss in detail. Then there is suction evacuation and dilatation evacuation. Dilatation can be done by 2 methods. There is the rapid method which is nowadays used. Slow method is now almost obsolete. And drugs which can be used for the rapid method are prostaglandins. Other than that, there are medical methods like mifepristone and methotrexate. So these are the ways by which we can terminate. First of all, menstrual regulation. Sometimes the patient comes to the OPD and she says she has missed the period as it is 4 or 5 days above her expected date. Then you can use a manual vacuum syringe. This has a plastic cannula and a suction device where you can manually create a suction. जैसे वाटर गन्स होती है ना होली वाली, उस तरीके से सक्शन करके इसके अंदर वैक्यूम बना लेते हैं एंड इट सक्स आउट वॉट एवर प्रोडक्ट्स आर इन द यूट्रस. दिस डज नॉट कम अंडर द MTP एक्ट. ये इतना अर्ली है कि आप कंफर्म भी नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है. दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन. सो दिस इज समटाइम्स डन even before the pregnancy is confirmed by ultrasound or by urine pregnancy test. Yes, missed period हुआ, patient OPD में आ गई 4-5 दिन के बाद. What you do is you use the plastic cannula and the suction apparatus to suck out the products whatever in the uterus. This is the type of syringe which is used. This is the plastic cannula is the known as the Carman's cannula, and then this is the suction apparatus. Contraindications is presence of pelvic inflammatory disease. So in infections you don't have to introduce the instruments. First you have to give antibiotic cover. Now coming to first trimester pregnancy termination, MTP kits तुम लोगों ने देखी भी होंगी. हमारे पास जो एग्जाम के अंदर ड्रग्स का जो बॉक्स है उसमें रखी रहती है ना. इट इज अ पैकेट ऑफ 5 tablets, right? So there is a single tablet and then there are 4 other tablets. So the first tablet is 200 milligram mifepristone. What is this mifepristone? It is anti-progesterone. ये क्या करेगी, उस प्रेगनेंसी को नॉन वायबल कर देगी. प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है, पहले कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, फिर प्लेसेंटा से बनता है, तो ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है. सो दिस विल kill the fetus and detach the fetus from the uterus. Then the second 4 tablets are the prostaglandins, that is PGE1 or misoprostol. ठीक है, ये 4 tablets क्या करेंगे, they will cause strong uterine contractions and then they will expel this products out of the uterus. ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसको नॉन वायबल कर लिया, फिर उसको एक्सपेल कर दिया. हाउ डू वी गिव दिस? आगे जा रहा है तो इससे भी पहले वाला. So how do we give these, prescribe these tablets? This mifepristone has to be taken on day 1, okay? And this misoprostol tablets have to be taken after 48 hours.
So let the mifepristone act and then take all the 4 tablets of misoprostol together. इसको देने से पहले क्या जरूरी होता है? एक अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि अगर एक्टोपिक हुई तो क्या करेंगे, है ना, ट्यूब तो रप्चर हो जाएगी. सो ओनली फॉर द इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी up to 9 to 10 weeks now it has been approved for up to 10 weeks. पहले सिर्फ 8 weeks के लिए थी, अब up to 10 weeks we can give this. तो इससे ज्यादा बड़ा ना हो. पता चला पेशेंट तो कह रही है 3 महीने है, जब आपने चेक किया या अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला इसको तो 4 महीने 5 है, then you cannot prescribe these tablets, वरना incomplete abortion हो जाएगा. You should also do the blood group. So if the patient is Rh negative, we can give anti-D injections after the termination. Another method is methotrexate and misoprostol. So instead of mifepristone, we are giving methotrexate injections 50 milligram per meter square IM, and 7 days later misoprostol tablets. Okay, so methotrexate का single injection 50 milligram का ही आता है. एक IM लगा दिया, उसको बोला जैसे मंडे आई हो अगले मंडे आ जाना, and you prescribe her misoprostol. So this will also terminate an early pregnancy. Second is suction evacuation. Suction evacuation is same as the one we have done in MR syringing, but here instead of one valve, this suction cannula has 2 valves, and it creates a stronger suction for the larger products of conception. If you are using the manual suction, it can be done in the OPD, but if you are doing the electric suction, then it has to be done in the OT. Okay? It can be used in MTPs, inevitable abortions, incomplete abortions, and hydatidiform moles. What can be the complications? Hemorrhage, shock, sepsis, and later on there can be infertility due to pelvic inflammatory disease or cervical incompetence. ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन करोगे आप, सर्विक्स को डायलेट करोगे, सर्विक्स को इंजरी हो जाएगी, तो आगे चल के फाइब्रोसिस होके इनकॉम्पिटेंट हो सकती है सर्विक्स. कोई भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो सेप्सिस कर सकता है ना, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. Advantages is, if it is done in an outdoor procedure, it is known as manual vacuum aspiration. So hazards of anesthesia are absent. But if you are using a stronger suction, that is electric suction, then it has to be done in the OT. This is how the suction cannula is introduced through the cervix into the uterine cavity, and it sucks out the product of conception. अब ये 14-15 weeks का नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि बोन्स बन गई. बोन्स को इतने छोटे से सक्शन कैनुला से कैसे निकालेंगे? So this is the method of first trimester termination of pregnancy. Then comes dilatation and evacuation. ये इसलिए भी important है क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, सक्शन कैनुला, डायलेटर्स, ये सब एग्जाम्स में रखेंगे और फिर पूछेंगे इनसे क्या करते हैं. उनके सिर्फ नाम रिकॉग्नाइज करने को नहीं बोलेंगे ये क्या है. Then the procedure will be asked, where it is used, how this procedure is conducted. So this is important. Here we dilate the cervix with the help of a dilator or with the help of laminaria tents, and then the products are taken out with ovum forceps. एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओवम फॉर्सेप्स जिससे हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, एंड देन चेक क्यूरेटाज इज डन. दीज आर द लैमिनेरिया टेंट्स. ये क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि स्मॉल स्टिक लाइक है, यू आर इंसर्टिंग देम इन द सर्विक्स. धीरे धीरे दे विल स्वेल अप एंड दे विल dilate the cervix. But this is foreign body, this will cause sepsis, this will take time. So we have better options available like the prostaglandins, which will soften the cervix and make the procedure more easy. After giving the prostaglandins like misoprostol or this carboprost, we can use the dilators. ये dilators होते हैं Hagar dilators. ठीक है? By this directly the cervix can be dilated. So these are again used in medical termination, incomplete and inevitable abortions, and H-moles. First of all, we'll dilate the cervix, we'll introduce the instrument, take out all the products of conception, we'll do a check curettage. Check curettage में क्या है? We'll scrape all the walls of the uterus and see if something is left inside, and we'll take it out with the curette. 2 stages not done anymore, but again there is risk of hemorrhage, there is risk of injury. Injury क्या हो सकती है? Perforation. आपने ज्यादा जोर से इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर दिया, वो यूट्रस को परफोरेट कर लेगा, अंदर जाके गट की इंजरी भी कर सकता है, एंड लेटर ऑन अगेन पेल्विक इन्फ्लेमेशन एंड सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कैन अकर. So this can be carried out in the first trimester of pregnancy and requires hospitalization and general anesthesia. ठीक है? ये ओपीडी में नहीं कर सकते क्योंकि जब सर्विक्स को डायलेट करते हैं तो पेशेंट कैन गो अंडर न्यूरोजेनिक शॉक. आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि सर्विक्स इज पेनलेस,
but still if you will dilate, there will be stretching of nerve fibers and patient can go in vasovagal syncope. Now, how to terminate the second trimester pregnancies from 13 to the 20th week. So earlier what they used to do is that a Foley's catheter was introduced in the cervix, and then hypertonic saline, urea and such chemicals were introduced. They used to cause irritation and membrane separation, and then uterus used to contract with this irritation and the products were expelled out. But these were also absorbed in the blood circulation. So 20% saline, है ना, 0.9 को अपन नॉर्मल सलाइन कहते हैं. इतना ज्यादा हाइपरटोनिक सलाइन देंगे तो it can cause electrolyte imbalance and cardiac arrhythmias, and even deaths had been reported. So all these have become obsolete and nobody is doing this extra-amniotic instillation of saline or urea anymore. These are only theoretical. What we do nowadays is we use prostaglandins, oxytocin, and the last resort is hysterotomy. Hysterotomy is just like a mini cesarean section where non-viable products are removed by the incision in the uterine wall. Cesarean में क्या करते हैं, incision लगा के viable fetus को निकालते हैं. 24 हफ्ते से पहले करेंगे तो उसी सर्जरी को hysterotomy बोलेंगे. Okay. So prostaglandins are mainly used in the termination of pregnancy, in the ripening of cervix. They are also used in the management of labor and in the management of PPH. So they are very important drugs in obstetrics. 3 तरह के हमें पता है. PGE2 होता है जो कि डायनोप्रोस्टोन जेल होता है, that is used only in labor. Other 2 misoprostol जो tablets आती है और carbopress जो injections आता है. These are used in first and second trimester termination and softening of cervix. Most important side effect is this cannot be used in asthmatic patients because it will cause bronchospasm and it can result in respiratory distress in such patients, and we have to find out the hypersensitivity to these compounds. Advantages is that it has a very strong oxytocic effect without the antidiuretic side effect of oxytocin. Now इनके जो मेन साइड इफेक्ट है, अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं इनसे, जैसे डायरिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी. दीज आर क्वाइट कॉमन. देयर विल बी स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सीवियर पेन आफ्टर द prostaglandins, and it can cause cervical lacerations as well. So what are the prostaglandins? These are the misoprostol and the prostodine. Misoprostol can be given as 400 microgram 3 to 4 hourly and repeated according to contractions. पर vaginally देते हैं ये second trimester abortion के लिए. And अगर prostaglandin लगाना है PGF2 alpha, then 250 microgram intramuscular. Intravenous is contraindicated, cannot be given. ठीक है? So that will dilate the os and begin the contraction. Then we can supplement it with oxytocin drip. एक बार os soft हो गया, dilatable हो गया, then we can start the oxytocin drip, which will result in regular rhythmic contractions and expulsion of the fetus and the placenta. It is going to be like mini labor. Last is the hysterotomy. मान लो previous 2-3 cesarean है patient, previous myomectomy है, और आप इतने strong contraction अगर misoprostol से या prostaglandin से करोगे तो this can result in rupture of the uterus. You are scared that this will result in rupture, or these medical methods have failed. Then you have to go for hysterotomy, in which a vertical or a transverse incision is given over the uterus and the fetus, non-viable fetus and the placenta are removed through the laparotomy incision. ठीक है, मतलब सिजेरियन जैसा ही है पर 24 हफ्ते से पहले किया है. ठीक है. सो अगेन एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसमें. हेमरेज हो सकता है क्योंकि इतना छोटा यूट्रस है, थिक वॉल्ड है. सो हेमरेज कैन अकर. नाउ ऑन दिस स्टिच लाइन देयर कैन बी अडेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन. लेटर ऑन क्या हो सकता है, वो जो स्कार बना है उसमें स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. अगर स्कार वीक बना है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रप्चर कर सकता है. ठीक है. दे कैन बी एंड मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज. अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा, इस्थमोसील करके एक लीजन होता है, दैट इज द वीक स्कार. उसके अंदर एक नीश जैसा बन जाता है, ग्रूव जैसा बन जाता है, जिसमें इन्फेक्शन होता रहता है और थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती रहती है. दैट इज नोन एज द इस्थमोसील. दैट अकर्स इन द सिजेरियन एंड हिस्टेरोटमी स्कार्स. So long term also there can be complications. Most of the time when we do hysterotomy, if further childbearing is not required, we usually do sterilization along with it. Complications, as we have already discussed, there can be hemorrhage, shock, injury to the cervix, to the uterus, perforations, okay, and thromboembolism. क्योंकि लाइकर होता है, लाइकर में suddenly अगर uterine open vessels में चला गया तो there can be amniotic fluid embolism.
और ये एम्बोलाई कहाँ जाते हैं? सीधे लंग में, एंड दे कैन रिजल्ट इन pulmonary thromboembolism and even death. So it is not something that we can do very routinely. Only if required, then only medical termination should be done. And later on, infertility, PID and menstrual disturbances can occur. So obstetric complication, आगे की pregnancies में patient पूछती है कि अभी MTP करा लूँ, आगे कोई problem तो नहीं आएगी. तो you have to tell them कि हो सकता है next time you will not conceive because you may have infection which will block your tubes or cause adhesions in your uterine cavity. These adhesions are known as the Asherman syndrome, right? Or later on there can be defective placentation or due to cervical incompetence you might have abortion. So आपको उसको early and late सारी complication बतानी है, then only if she is willing you have to go forward with the MTPs. And if somebody has not done the blood group and they have done a termination in Rh negative pregnancy and the fetus was Rh positive, so they can have Rh isoimmunization which will result in high drops in future pregnancies. So blood group of the patient is a must, and if she is Rh negative, husband is Rh positive, then anti-D immunoglobulins have to be given post the abortion. These are some instruments used in the medical termination of pregnancy. The first one is the uterine curette. Then there are the dilators, serial dilators है, पहले थोड़ा dilate करते हैं फिर बढ़ाते जाते हैं dilatation को. Then the Kruskov's and the Sims speculum and the Karman cannula, which will be kept in examination in the practicals. Okay. So this is more or less about the MTP. ये पूरा MTP का set है. Sister को जब आप बोलोगे कि हमें MTP करनी है, तो this is how she will arrange the instrument. कि पहले speculum लगाओ, cervix visualize करो, hold the cervix and then dilate the cervix, and then with the help of ovum forceps and curette, remove the products of conception. Thank you so much.